Hello friends. So today we are going to start with your chapter number 6 of your textbook part 2, that is cash flow statement. Now the name itself suggests what do we mean by cash flow statement. Cash ka flow, that is what we are supposed to consider over here. Whether cash is coming in or cash is going out, that is what we are supposed to look at. कैश फ्लो स्टेटमेंट में द फर्स्ट थिंग जो हमें दिमाग में रखनी है वो वही एक ही चीज़ है कि भाई वेदर कैश इज़ कमिंग इन, कैश आ रही है, और कैश इज़ गोइंग आउट, कैश जा रही है. बस उतना हमें पहले तो दिमाग में होना चाहिए. ये भाई हम असेट बाय करेंगे तो कैश आएगी कि जाएगी? जाएगी. If we are selling our assets, cash will come in or go out? Definitely come in, correct? So accordingly we are supposed to consider those things in our mind कि भाई cash flow statement is nothing but cash का inflow and cash का outflow. That is what we are supposed to look into, right? Now in this particular chapter, the whole cash flow statement, the whole cash flow statement is divided in 3 activities, 3 things that we are supposed to consider. The first is operating activity, then there is investing activity, and then there is financing activity. The whole statement about cash ka inflow and cash ka outflow is divided into 3 activities. That is what? First is operating activity, second is investing activity, and third is what? Financing activity, right? Now operating activity, the name itself is saying operating. मतलब क्या? रूटीन ऑपरेशंस जो अपने होते हैं, वॉट एवर रूटीन ऑपरेशंस दैट द फर्म इज डूइंग इन इट्स रेगुलर डे टू डे रूटीन बिजनेस, वो सारे हम कहाँ लिखेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में. वेदर इट इज़ परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एंड थिंग्स लाइक दैट विच इज़ रूटीन बिजनेस, वो सब कहाँ आएगा? डेफिनेटली कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में. व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब क्या? It is definitely related to certain investments. I'm not talking about the investments in security or something like that only. I'm talking about the assets also. कि भाई asset मैंने purchase करी है, correct? तो that is also what my investment, yes or no? So all those things related to my investments in any such assets will belong to which activity? Investing activity, yes or no? So कुछ इस तरीके से हम याद रखेंगे इस चीज़ को. बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट वी राइट व्हाट? असेट्स ओवर हियर एंड लायबिलिटीज ओवर हियर, राइट? All the things belonging to the asset side. I'm not talking about the current assets but the long term assets I'm talking about. All those things belonging to the asset side, जिसमें हम asset buy कर रहे हैं या sale कर रहे हैं, anything like that, वो सारी belong कहाँ करेगी? Investing activity में. मतलब if we are selling or purchasing any sort of assets, as such long term investments also, वो सब कहाँ हम लिखेंगे? Investing activity में. And financing activity, the name itself is again saying कि भाई finance, it is related to what? Can I say it is related to funds? Whatever funds that the firm is having with it वो सारा हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? In financing activity. मतलब क्या? Can I say यहाँ पे that is on the liability side we record what? Capital that we know. बट कैन आई से सारा जो भी सरप्लस ऑफ प्रॉफिट इज देयर तो वो सब यहाँ रिकॉर्ड करेंगे. जनरल रिजर्व यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डिबेंचर्स यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, करेक्ट? यस और नो? सो ऑल दोज थिंग्स आर रिलेटेड टू व्हाट? योर कंपनी का फंड्स, राइट? सो ऑल दोज एक्टिविटी बिलोंगिंग टू दिस लायबिलिटी साइड विल बी रिकॉर्डेड एट which activity? Financing activity. I hope this basic part is clear with all of you all. Operating activity में क्या लिखना है? All the routine operations of business.
whatever routine operations that your business is making, वो सारा हम कहाँ लिखेंगे? In operating activity. Then all the things, all the activities that we are doing with asset side, वो सब कहाँ लिखेंगे? Investing activity में. And all the activities related with what? Liability side. All the activities related to what? Funds. वो सब कहाँ लिखेंगे हम? Financing activity में. Correct. Now कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मेट आई विल शो यू. कुछ इस तरीके से बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट. पर्टिकुलर्स, amount rupees. Now your first part of cash flow statement is what? That is your A part, that is cash flow from operating activity. वो सारी चीज़ें हम कहाँ लिखेंगे? इधर लिखेंगे. First part of your cash flow statement. Then your B part of the cash flow statement is your cash flow from investing activity. And the C part of the of the statement is cash flow from financing activity. And what you are supposed to do is you are supposed to make the totals of it, A plus B plus C, and you are supposed to compare this totals, that is A plus B plus C का total जो भी आएगा उसको हम compare करेंगे opening cash and cash equivalents के साथ and closing cash and cash equivalents के साथ. कैसे करेंगे वो एक्चुअल पता तो क्वेश्चन में ही चलेगा. ओरली करने वाली चीज़ नहीं है ये. क्वेश्चन प्रैक्टिकल सम्स करे तो ही पता चले कि एक्चुअल में होता क्या है, ये कैसे होता है. करेक्ट. सो ओवर हियर योर कैश फ्लो स्टेटमेंट विल समवॉट लुक लाइक दिस. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी finish the whole format for you. Yes. So it will end up looking like this somehow. And now the question arises, तो इतना बड़ा सम आएगा, इतना सारा कुछ करना है? The answer is no. As you all people are belonging to the Gujarat board, in Gujarat board का syllabus even if they ask the questions, they are not going to ask the whole cash flow statement. Either they'll ask you the cash flow from operating activity, or they'll ask you the cash flow from investing activity, or cash flow from financing activity. So you are not supposed to do the whole cash flow statement in one. पूरा एक स्टेटमेंट नहीं पूछने वाले एग्जाम में. यू आर गोइंग टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इन योर एग्जाम. आपको एग्जाम में जो पूछा जाएगा दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट. दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी गिन के दिखाओ, या तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द होल कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट. सो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू कि भाई आपको इतना सारा कुछ एक साथ याद नहीं रखना है. बट व्हेन आई टॉक लॉजिकली इट इज़ अ बैड थिंग फॉर यू, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग, राइट. आपको नहीं समझ में आएगा कि भाई ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तीनों एक साथ कैसे वर्क करते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू आस्क यू द एक्टिविटीज इंडिविजुअली, राइट. सो दैट इज़ ऑल फाइन. सो दिस इज हाउ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज गोइंग टू लुक लाइक. And we are going to understand all the three activities in different videos, in which I'll be explaining operating activity differently, then investing activity, and then financing activity. I hope you all are clear with this particular basic part of your cash flow statement. Thank you.